और हमने उसके बहुत सारे फोरम्स बनाए थे जिसपे हमने शुरू नहीं किए, लेकिन उस ग्रुप के बनने के बाद जो पहली चीज हुई वो ये हुई और हमने पीपीएच में जो लेवल था इसलिए शुरू किया कि जब मैं सेफॉक की प्रेसिडेंट थी तो वो था और पीपीएच बनने को नेपाल में and I came back and I said we need to do this in Pakistan, so we developed a project and we applied to FIGO for the project and we named 2 countries where we wanted the project, एक पाकिस्तान से और एक बांग्लादेश। जब प्रोजेक्ट बना और फाइनल हुआ मैं वेटिंग फॉर द लैपटॉप टू बी कनेक्टेड, जरा इसको प्लीज जल्दी करवा दो। मैं करवा रहा हूं। हां ओके थैंक यू। तो जब हमने वो किया तो प्रोजेक्ट तो हमें मिल गया एज प्रेसिडेंट ऑफ सेफॉक, लेकिन मिला किसको? बांग्लादेश को। उन्होंने कहा कि ये डोनर है वो पाकिस्तान में इतना टीम नहीं है, उन्होंने बांग्लादेश को दिया। अब तुम क्या कहते? अब मैं तो सेफॉक की प्रेसिडेंट थी, मैं तो ये नहीं कह सकती थी कि और साउथ एशियन कंट्री यहाँ ना करो, तो मैंने उनको कहा ठीक है थैंक यू वेरी मच। वी स्टार्टेड working along with that from PPH bundle goes to Bangladesh. लेकिन there is recognized startup team. मैंने कहा यार ये this is not okay. We need to do something. So as soon as I got time, मैंने कहा हम खुद करेंगे. So what we are doing is not supported by any organization like WHO or blah blah blah. Nobody is giving us any funding. But what we are doing is we have actually utilized. Someone is a little new in this particular instance. आपने करते लगा आवाज आ रही है? ओके ये स्पेशल रिक्वेस्ट है ओके so what we did was कि हमने इसका नाम रखा है महफूज माँ। So महफूज माँ पर 2 चीजों पे काम कर रहे हैं। One is PPH eradication or PPH management, PPH detection and management, and the other is eradication of anemia in Pakistan. So ये हमारे 2 objectives हैं and we have support from 3 pharmaceuticals and Bahawalpur is actually the 4th pharmaceutical and hopefully we will work further with them. So Abbott, Sami and Hilton supported us in various small things. So Sami वालों के साथ आजकल हमारा काफी strong जा रहा है, हम जहाँ जाते हैं हम उनको बता देते हैं कि यहाँ workshop करेंगे, so they arrange our transport and they facilitate the workshop in that particular city. अब Sami वो के साथ भी हमने बिल्कुल ही but if it were not for the pharmaceutical we would not have been able to do it. None of our facilitators takes any on the radio, so ये basically हमारा background है. Now coming on to what PPH is, मैंने एक बात कह रही है, आप लोगों में से कितने लोग बैठे हुए हैं जो ये कहते हैं कि हमें So आप में से कोई ऐसा है जो कि ये कहता हो कि मुझे PPH की मैनेजमेंट आती है? I would like to थोड़ा बहुत रिस्पॉन्ड करो। अच्छा चलो, आप में से कौन-कौन समझता है कि PPH की मैनेजमेंट आती है? असल में मैंने सब बता दिया, लेकिन we still want sometimes problems होती है। तो हम सबको PPH की मैनेजमेंट आती है। हमने कोई ऐसा नहीं है, तो अगर मैं ये कहूँ कि वर्कशॉप में इतने लोग आए हैं, सभी करते हैं। PPH की मैनेजमेंट आती है, आंसर इज yes. So the answer is yes. But as you said yourself, but the PPH की मैनेजमेंट में कुछ गैप है और वो गैप हमने एड्रेस करना है। About this gap and how can we build our capacity together कि ये मसले के साइज में हम इनको खत्म कर सकें। ठीक है? Agreed on this? अच्छा, अगर आप इस पिक्चर को देखते हैं and look at that bundle of sticks, मैं ये जरूर वाकया सुनाती हूँ। मेरे साथ जो कॉलीग आते हैं उनसे साथ आ गई होंगी, but I still like to do this. This is a bundle of sticks और इसकी स्टोरी पीछे ये है कि there was this guy who had 7 sons. मेरे लड़ना बंद कर दिया ताकि जब मैं मरूं ये सारे गुजरे। तो उसने क्या किया कि वो क्रियाओं ने लेक्चर देता था, कोई किस्सा सुनाता था, बच्चे नहीं सुनते थे, वो लड़ते जाते थे। तो उसने क्या किया, एक बंडल ऑफ स्टिक्स लेके आया, उसको 2 बंडल आया, एक बंडल को
उसने खोला और उसने हर लड़के को एक एक स्टिक पकड़ा और उसने कहा कि इसको तोड़। लड़कों ने उसको तोड़ा, ठीक है, वो टूट गई। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद उसको स्कैब किया, उसने कहा सारे लड़के इसको तोड़ो। उन्होंने उसको तोड़ने की बहुत कोशिश की, वो ना टूटा। तो उसने उनको मॉरल जो स्टोरी ये बताया, उसने कहा कि जब हम इंडिविजुअल बन जाते हैं तो हमें ब्रेक करना बहुत आसान होता है, बट व्हेन वी आर टुगेदर नोबडी कैन ब्रेक अस। मैंने इसको कन्वर्ट किया है टू आवर पीपीएच बंडल अप्रोच की फिलॉसफी। और वो फिलॉसफी ये है कि जब हम इंटरवेंशन करते हैं और एक एक इंटरवेंशन करते हैं और अकेले एक इंटरवेंशन करें अपने अपने अस्पतालों में, तो वी आर नॉट एबल टू सेव द लाइव्स ऑफ द वुमेन। लेकिन अगर हम पीपीएच की मैनेजमेंट को दो बंडल में कन्वर्ट कर दें, यानी कुछ चीजें पीपीएच की एक बंडल में डाल दी है फिर दूसरे में बाद में काम किया, if we do that, then we will be able to save the life of people. That is the basic concept of PPH bundle approach. Now, if I ask, what are the strategies for people? आप उसमें मुझे हाँ या ना करते हैं, I have to be that. Nutrient के साथ? Yes. Agree? Nutrotonic? Yes. Transdermal? Yes. Balloon chapter? Yes. Nutrient compression, aortic compression. Yes. Yes. So ये सब तो हम करते हैं, लेकिन इंडियन बंडल अप्रोच में इन सब स्ट्रैटेजीज को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया रिक्यूरी। तो एक मेरी बंडल की लॉजिक ये है, दूसरी मेरी बंडल की लॉजिक ये है कि जब हम सब गायनेकोलॉजिस्ट, और मैं उसमें जो हाउस सर्जन है उसको भी गायनेकोलॉजिस्ट समझती हूँ, फैमिली फिजिशियन को भी, कंसल्टेंट को भी, प्रोफेसर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, एवरीबडी midwives, everybody who's in the team, if we all decide today, we are not going to let anybody die like a team. If we become a big team, हमारी ये पाकिस्तान की टीम है, we are not individuals. हम हमारे रिजल्ट उससे बहुत बेहतर होंगे जो इंडिविजुअल अपने अस्पतालों में करते हैं। क्या इससे नहीं करते हैं? Yes. Agree? Yes. So ये तो हमारे बेसिक प्रोवाइडर्स हैं, और आप उसके बाद हमारे मुल्क में वो क्या है, and I like to very slide very favorite है because this tells you a lot of things. पहली बात ये बताती है कि हमारी maternal mortality is still 186 per 100,000 mortality, but 70 तक तो हम तो नहीं पहुंचे। तीसरी बात, obstetrical hemorrhage is the most common cause of pregnancy. So what we are going to talk about today, मैनेजमेंट ऑफ यूट्राइन एटोनी क्या करनी है, क्योंकि पीपीएच का सबसे कॉमन कॉज है। हम टीयर आइडेंटिफाई करके स्ट्रक्चर कर लेते हैं, हम सिजेरियन स्टेंटिंग कर लेते हैं, लेकिन वो चीजें जो कि एक मिडवाइफ पर एक जूनियर डॉक्टर भी कर देते हैं और जिस चीज पे मरीज को मरना नहीं चाहिए उस पे हमारा मरीज मर जाता है। So that is the focus that we should do. If you look at this blue box on the right corner, it actually shows you what is happening in Punjab. So ये नहीं है कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, गवर्नमेंट इज आल्सो डूइंग इट बेटर। सो व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग? गवर्नमेंट ने 3 डेज को आइडेंटिफाई किए। फर्स्ट एरिया जो है वो अवेयरनेस, सेंसिटाइजेशन और अर्ली डिटेक्शन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस के लिए काम करता है। Then the government has created institutional facility 24/7 for birth, जिसके उन्होंने बेसिक हेल्थ यूनिट और आरएनसी को कन्वर्ट किया है इनटू 24/7 बर्थ फैसिलिटी। और वो नंबर ये जो है ये 1 2 3 4 जो है, दिस इज अ लिटिल बिट लेवल। The government is trying to create a network of facilities where where emergency obstetrical care services are available. Put misoprostol in the essential drug list, and also now so misoprostol is available in all healthcare facilities which are हमारे पास pointer है? देंगे तो बात नहीं, which are manned by the government. So this is what the government is doing. Then the government is focusing on patient triage. So every tertiary care hospital has a big poster in their label, जिसमें green, yellow or red columns हैं. So telling that if a patient comes to you with a complication of pregnancy, she has to be seen by the senior most doctor within the shortest possible period of time. So जो patient category रेड में है वो कंसल्टेंट ने देखने वो उसके देखने वाले हैं। ट्रेनिंग
फिर रजिस्ट्रार के सीनियर रजिस्ट्रार वो सारा टाइम जो है वो बच जाता है। तो थर्ड डे कोई टेस्ट कर रहे हैं, then the government is working on the ambulance services or a rural ambulance service be available, which is not covering the whole of Punjab, but it is there and the numbers are increasing. उस पे काम करें and then the audit of the patient death. So MDSPR के ऊपर भी काम जो है वो काफी ज्यादा हो रहा है। Patient को गलत बोलती हूँ, it is इसमें लिखा हुआ नहीं है, but it is maternal perinatal death surveillance reporting. So उसके ऊपर काम हो रहा है because then you were able to find out what was the cause of the death of the mother. Now I talked about this already. According to the Sustainable Development Goal, we have to deal with three markets. There are four interventions which can reduce maternal mortality. I have talked about postpartum hemorrhage, prevention and management. But there are others as well. Abortion is what regular abortion incidents go handle content, so you can save the life of the mother. If you meet the unmet need of contraception, and we are able to provide good contraceptive services, maternal mortality will reduce. And the fourth thing is non-communicable disease prevention and management. और वो क्या है? वो है obesity, hypertension, diabetes, heart disease. तो मैं hypertension, diabetes की बात नहीं करती, मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि if as a gynecologist we are able to talk to our women to manage a healthy lifestyle and maintain a normal weight maternal death. Actually, patients are coming to all of us 300 pounds, 257, 280. उनकी डिलीवरीज भी होनी है, उनको आपने मैनेज भी करना है, so that is a big challenge for all of us. Now, let's go to the PPH bundle approach because the time is also limited and we want to. ये मेरी स्लाइड है जो कि my first question to all of you is हम PPH कैसे डायग्नोज करते हैं? Blood loss. So how many of you actually do a visual assessment of blood loss? A very answer. Simplify करने की बात ये है, मैं इसको अपने सर्विसेज पे लेके जाती हूँ because it is good to relate to yourself. हमारे वार्डों के अंदर शुरू हो जाए पेशेंट को या बहुत ज्यादा ब्लड, सो मेरी थ्योरी ये है कि हम पीपीएच का डायग्नोसिस लेट करते हैं. इफ यू आस्क इन योर मॉर्निंग मीटिंग कि कल कितने पीपीएच हुए, तो वो पीपीएच आपको बताएंगे जिसमें वो औरत मरते मरते बची, है ना. वो कहेंगे मैडम एक मीटा हुआ था उसमें पीपीएच हो गया, वो पेशेंट आई थी वो मॉर्बिड थी उसको हमने बचा लिया. But nobody talks about that patient who had a blood loss of 550 ml. By book, 500 ml is PPH for vaginal delivery and 1000 ml is PPH for cesarean section. Agree? But क्या हम 550, 560, 600, 700 को diagnose करते हैं? The answer is कोई नहीं. So एक मैं ये बात तुम्हें चाहती हूँ कि इस बात को याद रखो and I come back to that. My second point is incidence of anemia पाकिस्तान में कितना है? Pregnant औरतों में 60%, 56 to 60%, and in some areas it is 80%, in other areas it is 30%. How many times do we get a patient in our delivery room जिसका hemoglobin 4, 5 या 6 होता है? Many times. So इसका मतलब ये हुआ कि we have to make sure हमें पता है ये सबको by the knowledge that we have that if you have a cohort of patient for delivery who has got a hemoglobin of 5 and you had a cohort of patient for delivery who has got a hemoglobin above 11, above 11 probably will do better in labor, less chances of PPH. But 5 is going to end up into PPH and you will be in a serious condition. So one lesson is all patients to deliver at a hemoglobin of 11. ठीक, so इसलिए मैंने इसकी मैनेजमेंट को 4 पोर्शंस में डिवाइड किया है. The first portion is prevent PPH. Now many people can say you cannot prevent PPH, but in a way sometimes you do reduce the incidence of PPH which equates to prevention. So how can you prevent? हमने सर्विसेज के लिए किया था जो पेशेंट्स हमारे पास 28 बुकिंग है आ रहे हैं पेशेंट सारे आ रहे हैं, लेकिन हमने एक रूल बनाया था
28 वीक्स में हुआ है या नहीं हुआ हुआ हम नहीं करते हैं। If the hemoglobin is less than 11, we would calculate the hemoglobin deficit by the Benzoni's formula and give injectable iron to the patient. With the result कि जब उनमें से कुछ पेशेंट आपके पास डिलीवरी के लिए नहीं आते, लेट्स से वो अपने घर के पास कहीं चले गए, कुछ आ भी गए, वो कहीं भी जाए, अगर उसका हीमोग्लोबिन 28 वीक्स पे 11 हो गया, she will not be limited delivery. Agree? So हमने ये शुरू किया। जब हमने शुरू किया तो हमने इतने इंजेक्शन मांगे कि हॉस्पिटल को लगा कि गायनी के अंदर चोरी हो रही है। उन्होंने ऑडिट ऑब्जेक्शन लगा दिया और हमें ऑडिटर दे दिए चेक करने के लिए कि टीके कहाँ जा रहे हैं। बट देन दे रियलाइज कि हम टीके मरीजों को ही दे रहे थे, तो हमें फिर रेगुलरली इंजेक्शन मिलने शुरू हो गए। और इस वक्त उसके बाद से इस वक्त हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गवर्नमेंट सपोज टू डिवाइड इंजेक्शन। उस जमाने में नहीं होता था, हमने एलपी करके मंगाए थे और खूब लगाते थे। हमने वो लगाए होते थे चेयर्स बिठा उसके ऊपर अपने अपने ओपी भी लगाते थे। यूज्ड टू डू इट इन द वार्ड, तो बेड्स तो होते ही वार्ड में इतने, तो हम चेयर्स लगा देते थे। 8-10 कुर्सियां लगा दी हैं, एक नर्स की ड्यूटी होती थी और एक डॉक्टर, वो सबको टक 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 करके आयरन लगता था, वो लगवा के करते थे लोग। अगले हफ्ते या जब भी उन्होंने आना होता तो फिर आते थे, फिर लगते थे इस तरह। With that, we work so much on it कि हमारी यूनिट के अंदर दुनिया का मरीज नहीं मिलता, फिर भी इमरजेंसी में आ सकते हैं, बट यू हैव डन योर बेस्ट। और फिर जो पेशेंट यूनिट लेबर में ऐसे आता था उसको टीके लगा के घर भेज देते ताकि वो 11 से कम पे घर ना वापस पहुंचे। So my first strategy for prevention and my request to all of us that give check anemic status at 20 weeks and make sure all your patients deliver at a hemoglobin of 11. और इसमें जो बिल्कुल लास्ट रो में is very important to save blood from being lost for that reason. So active management of third stage of labor, हमने एक दफा कहा कि हम active management होती है, मॉर्निंग मीटिंग में हमने पूछा, सबने कहा हाँ होती है। मैंने कहा कोई नहीं, नहीं डॉक्टर होती है। मैंने कहा अच्छा। हमने छापा डाला तो अगर 10 मरीज उस दिन डिलीवर हुए तो 2 की होती थी, 8 की नहीं होती थी। Definitely they did not have a system and delivery. So अगर सिस्टम ही नहीं है तो फिर अभी बता देती हूँ, तो मुझे कितने लोग समझते हैं कि तुम्हारे लेबर से एक्टिव मैनेजमेंट हो रही है, क्योंकि उसमें ध्यान देना पड़ता है, ध्यान देना टाइम है। 1% हो गया तो जिसने डिलीवरी की उसने आपको 2 लगानी है, उसने कहना है कि तुम गलत टाइम पे इंजेक्शन लगाया ना, वगैरह वगैरह वगैरह। सो एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज। द सेकंड थिंग इज डिटेक्शन। डिटेक्शन के लिए अभी यहाँ पे करना, आई डोंट थिंक इट इज बोला वो विजुअल असेसमेंट ऑफ ब्लड लॉस का चार्ट लगा हुआ है। सो फार नीमो को मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आज के जितने पार्टिसिपेंट्स हैं ना, फार नीमो को चाहिए कि इसका प्रिंट आउट कराए और वो हर एक को दे, ताकि पीपल कैन गो एंड टेस्ट इट इन द कि 30 ml का बॉस था कि क्या था, हो सकता है पिक्चर रिमेंबर करने मुझे तो बहुत मुश्किल हो, बट इफ that chart is posted in my delivery, then I request all my doctors, junior and senior, and say, assess करो कितना blood loss है and write it on the chart. So हमने services में ये किया और मैं आगे खड़े होकर बता सकती हूँ कि जो मेरे उसमें फिर हमने कॉल चेंजेस कवर की। अगर ब्लड लॉस 500 से ऊपर जाता है तो कई दफा पीपीएच नहीं होता। जब जूनियर डॉक्टर डिलीवरी करते हैं तो क्या करते हैं, हाँ इसलिए बड़ी अच्छी बात कही है, प्लीज बोलो। एपिजोटमी करते थे टाइम से पहले, क्योंकि उन्हें टेंशन होती है कि क्लियर रात है ना। जितना जूनियर उतनी टेंशन ज्यादा, जितने सीनियर उनको पता है इतनी जल्दी भी आती है। सो वो क्या करते थे, हमने ये डिस्कवर किया उससे अपने बारे में बहुत कुछ पता चलता रहता है। हम क्योंकि हमको लेबर से बहुत दूर होते हैं, क्योंकि बड़े होते जाते हैं लेबर से दूर हो गए, तो हमने फिर ये कमरे में बैठ के डिस्कवर कर दिया कि ये जो ब्लड लॉस ज्यादा एक चीज में से कितनी सारी बातें निकल जाती हैं। तो visual assessment of blood loss is very important and when declare PPH। अब declare PPH का क्या मतलब है? मुझे याद है
अकेला डिलीवरी रूम सर्विसेज हॉस्पिटल का एक आप एक नर्स है। अब पीपीएच हो गया, आप 2 मिनट भी नहीं कर सकते। पीपीएच हैज टू बी अनाउंस्ड, पीपीएच हो गया, वी नीड हेल्प। सो या तो कोई बजर होना चाहिए या कोई फोन कॉल होनी चाहिए आपके पास इमीडिएटली 3-4 लोग जिसको ऑब्स्टेट्रिकल केयर टीम भी आजकल कहते हैं, वो टीम आपके लिए हाजिर आपके साथ। सैटरडे को ये पेशेंट डिलीवर हुई 10 बजे, 12 बजे मुझे कॉल आई, शी इज ब्लीडिंग, शी हैड टोल्ड मी व्हेन आई वेंट टू सी हर, शी हैड 8 मैंने उसको बलून टेम्परेचर डाल के तो इधर देखा, शी वाज ओके, आई केम बैक। पहली दफा मेरी जिंदगी में हुआ कि बलून टेम्परेचर के बाद कोई पेशेंट नहीं किया, पहली दफा जिंदगी। लेकिन हुआ, मैं गई दोबारा, मैंने जाके देखा, मैंने उसकी सक्शन की, कोई क्लॉट्स थे शायद, हमने उसी के ऊपर डाल दिया था क्या, सक्शन की हुई, पुट इन द बलून टेम्परेचर। सर गया है कि अगर विजुअल असेसमेंट ऑफ ब्लड लॉस ही ना हो तो आप पीपीएच ना डिक्लेयर कर सकते हैं, ना कॉल फॉर हेल्प कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। सो देयर हैज टू बी a mechanism for calling for help. And then the last thing, what is actually that we are, मुझे लगता है कि इन वर्कशॉप्स का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम नॉन क्लिनिकल थिंग्स की बात करें, बिकॉज दे आर द गेम चेंजर्स। क्लिनिकल थिंग इज नॉट द गेम चेंजर, वो हम करते ही हैं, नॉन क्लिनिकल थिंग इज द गेम चेंजर। अभी मैं बताऊंगी कैसे। तो क्लिनिकल बंडल्स के अंदर 2 तरह के बंडल्स हैं, देयर इज अ प्राइमरी बंडल एंड देयर इज अ, these are पीछे लेके जा रही हूं आपको, जस्ट हैव अ लुक एट दिस स्लाइड। सो दिस इज द प्राइमरी बंडल एंड ओवर देयर इज द रिफ्रैक्टिव बंडल। प्राइमरी बंडल के अंदर 4 चीजें और रिफ्रैक्टिव बंडल के अंदर भी 4 चीजें। प्राइमरी बंडल इज द फर्स्ट स्पॉट। अब करते क्या, जो ही हमने पीपीएच डिक्लेयर किया, we say PPH has happened. Now what is the team supposed to do? Massage the uterus, हमने बात की थी पहले, हमें सब बातें पता है। Massage the uterus, give uterotonic, give IV fluid and give transdermal. What is the difference then? The difference is do it all together. So नहीं हुआ, अच्छा ऑक्सीटोसिन जरूर नहीं हुआ, अच्छा ये कर दो। That is the only difference. Do it all together. So the primary all 4 things together. जो ही मैं कहूँ पीपीएच हो गया, एटोनी है, मेरी टीम जो है वो 4 चीजों को इकट्ठा करना शुरू कर दे। सो नाउ वी डू इज हम पहले से बदल कर, यू डू दिस, द पेशेंट डज नॉट इम्प्रूव, देन व्हाट डू, देन यू गो टू दिस बंडल। और ये बंडल क्या है, ये बंडल बेसिकली आता है। सो मैंने कहा था इसमें 4 है, क्योंकि पहले वाले में हमने 2 लिखे हैं। So it is bimanual uterine compression, लेकिन है bimanual uterine compression की proper नहीं। मुझे आते हुए हमारी एक फैसिलिटेटर कह रही थी, लेडी विंटर में अभी भी uterine packing होती है। तो she said हम वहाँ uterine packing करते हैं। मैंने कहा बात सुनो, मुझसे 1947 की बातें बंद कर दो, मैं नहीं uterine packing को सपोर्ट करूँगी। यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो करते होंगे, लेकिन वजह बताऊंगी क्यों मैं किया। क्योंकि यूट्राइन पैकिंग की जगह वी हैव अ बेटर कंप्रेशन मैनूवर व्हिच इज बेलून टेम्परेचर, जिसमें आपकी स्किल कम और पेशेंट का बेनिफिट ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जो बेलून टेम्परेचर होता है वो सारी वॉल्स को इक्वली प्रेस करता है। A packing might not do that, so it might do for you, for her, for me, but it will not do for everybody in the room. So it is not a practice which needs to be promoted. What we need to promote is balloon temperature. So bimanual compression, aortic compression, अगर patient बहुत ज़्यादा bleed करेगा, ये हम सारी skills demonstrate करके आपको दिखाएंगे। Then balloon temperature, and if nothing is working, then anti-shock garment जो कि टेबल के ऊपर खुला हुआ पड़ा है। Anti-shock garment पाकिस्तान में इस वक्त readily available है, लेकिन ये हम स्पेशली हमने प्रोक्योर किया और इसलिए जरूर दिखाते हैं कि हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ थोड़ा सा नेगोशिएट कर रहे हैं कि ये मंगवाने चाहिए। दे शुड बी अवेलेबल 2 at least in every hospital, especially the smaller the hospital, the more is they need to have the anti shock garment, क्योंकि अगर आपका कुछ काम नहीं कर रहा, आपने एंटी शॉक garment में पेशेंट को रैप करना है एंड यू आर गोइंग टू रेफर द पेशेंट टू द नेक्स्ट फैसिलिटी। एंटी-शॉक garment क्या करता है, ब्लीडिंग को रोक देता है एंड इट मेंटेन्स द वाइटल्स ऑफ द पेशेंट सो दैट द पेशेंट डज नॉट कोलैप्स। सो दोबारा बता देंगे, फर्स्ट रिस्पॉन्स और द प्राइमरी अप्रोच,
which is all four things which we do normally: uterine massage, ultrasonics, crystalloids, and transgenic acid. If it does not work, then you go to the refractory bundle, which consists of four maneuvers, which are all compression maneuvers. इसके अंदर मैंने नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर सिजेरियन सेक्शन के दौरान एड होनी हुई है, then you can add these links to the list as well. But we don't write it normally क्योंकि हम normally general delivery और उसके बारे में ज़्यादा बात करते हैं. But this is what it is. Now let's see and go back once again. So मैं इसके अंदर मैंने एक घंटा बोलना, उसके बाद we'll all do skills. मैं बार-बार चीजों पे वापस जा रहा हूँ. So basically this is again just to reiterate the fact that every patient should deliver at a hemoglobin of 11. That is our job. अगर हम कुछ नहीं कर सकते, मैं हाउस सर्जन हूँ, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मैं पेशेंट के लिए कुछ नहीं कर सकती. मैं ये तो कर सकती हूँ कि उसका हीमोग्लोबिन 11 पे भेजूँ. I think it is well within our power. पता नहीं क्यों है, लेकिन हमारे जो पेशेंट्स हैं वो पूरे 9 महीने आयरन खाते हैं और फिर एनीमिया के साथ आपके पास 9.5 के साथ तो सभी आ जाते हैं. कम वाले तो चलो शायद कम होंगे, लेकिन mild to moderate anemia, so it's like with everybody almost. Educated, less educated, rich, poor, everybody has got anemia. So the first message is make sure your patient has anemia. The second message is active management of third stage of labor. को implement करना लाजमी है. If you are going to implement the active management of third stage of labor, blood loss and delivery will reduce. Then visual assessment of blood loss, इसकी मैं पूरी डिटेल अपने सेशन करना है, we are going to talk about it. लेकिन इसके अंदर मैंने आपके लिए 5 एस्टिमेट्स हैं जिनको मार्क किया, because I feel that all 9 are difficult to remember but 5 are easy to remember. So 5 में सबसे simple वहाँ से right corner से शुरू कर gauze piece. A fully soaked gauze piece is 60 ml, right? A fully soaked pad is 100 ml. A full ये किसी जगह पे डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट ये आगे की रफ एग्जामिनेशन है. A fully soaked, a full kidney tray is 500 ml. ये small वाली नहीं, बड़ी वाली. It is 500 ml. Patient who has got a dignity sheet soaked of blood is 1000 ml, and patient who has got a spillage on the floor is 2000. ठीक है? So ये बात इसलिए वो बीच में से चीजें निकालती है. असली 5 ये. अगर मैं किसी यंग डॉक्टर से कहूँ, how many gauze pieces did you use in the last delivery? तो यंग डॉक्टर ने बताई कि मुझे याद है किसी को? अक्सर होता है याद नहीं होता. क्यों? 5, 7, 10 यूज किया, फेंक दिया, यूज किया, फेंक दिया. We don't count. और जब से मैंने ये पढ़ा और ये इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, I realized that बहुत gauze piece यूज करते हैं और अच्छा खासा ब्लड लॉस होता है. So we do not calculate. That is why it is very important to calculate what is the blood loss. अच्छा, अगर मैं पूरी वर्कशॉप का निचोड़ बोलूं क्या है, तो it is that picture on the left of all of you, जिसके अंदर एक सर्कल और एक ये चार्ट है, या ये एक ये और एक सर्कल में बताऊंगी कि पूरी वर्कशॉप का निचोड़ है. और अगर तुम लोगों को ये किया तो दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन रिमेंबरिंग व्हाट आई सेड. क्योंकि मैं समझती हूँ हर बंदे को हर चीज याद करनी जरूरी नहीं है. चीजें मौजूद हैं, वो लगी हुई हैं, हम उनको देखें. ये नेट पे से भी डाउनलोड हो सकती है, इसकी पिक्चर भी ले सकते हो, हम भी शेयर कर सकते हैं if you want. So what it is, you look at the top portion. Top portion कहता है कि PPH emergency response में active management of third stage of labor and call for help are two very important components. Then it says the ये जो नजर आ रहा है, मैं ज़्यादा जा नहीं सकती because of my wiring, but this is the first bundle जिसके हमने फोल्डर दिए हैं सबको. अपना फोल्डर के पीछे का फोल्डर खोलो, पीछे नहीं, open your folder. You'll find it inside, so you don't have to look at here and there. अगर आप फोल्डर में देखें तो पहले ब्लॉक के अंदर 4 चीजें आ रही हैं. दिस इज द प्राइमरी बंडल अप्रोच जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं. उसके बाद 3 चीजें और आ रही हैं. So when you are doing the primary bundle approach, you have to ensure the bladder is empty, the uterus is empty, and there are no tears. When you are doing the secondary bundle approach, especially to the people who are coming from smaller hospitals, अगर आप इस secondary
PPH bundle approach की बात आती है तो इसका मतलब है आपको पेशेंट रेफर करना होगा। डोंट वेट। रेफरल नेटवर्क एक बड़ी जबरदस्त चीज है। टर्शरी वाले तो कुछ नहीं कर सकते, हमें तो करना ही करना है। हमारे सर पे तो क्या कहते हैं, आलू है, तो हमें तो अपने आलू को डील करना है। बट पीपल हु आर वर्किंग इन स्मॉलर हॉस्पिटल्स डोंट फील शाय of referring a patient, but the patient has to be referred in time and with the appropriate measures being provided. So when you do the secondary, you are not sure, refer the patient. आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। और टर्शियरी केयर वालों के लिए ये है कि अगर आपने रिफ्रैक्टरी बंडल की मैनेजमेंट शुरू की तो साथ ही आपको ब्लड और थिएटर दो चीजें तैयार करके रखनी है, ठीक है। सो ये बेसिकली समरी है ऑफ ऑल दैट यू आर गोइंग टू टॉक टुडे। ये सिर्फ विजुअल है टू रिमाइंड यू दैट कॉलिंग फॉर हेल्प इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुमने अपने इस प्रकार में कोई सिस्टम बनाना। अगर हमारे हॉस्पिटल का सिस्टम है चीख मार के बुलाओ पीपीएच के लिए, मुझे इतराज नहीं है, तभी कोई आना भी चाहिए। तो कोई सिस्टम होना चाहिए। Then I have already talked about the PPH primary bundle and the supportive measures which are the empty bladder, empty uterus and treatment of tears. इसके बारे में ध्यान रखना है। कई दफा ये होता है अगर आप एटोनी की फॉरन मैनेजमेंट शुरू कर दो और टीयर को आपने नहीं देखा तो कोई फाइंड आउट दैट देयर इज अ सो ये सिर्फ एक विजुअल डिपिक्शन है टू रिमाइंड यू यूट्राइन मसाज इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम जब यंग थे तो हमें लगता था कि यूट्राइन मसाज जो है ना ये शायद फैशन के लिए करते हैं, इसकी कोई खास वैल्यू नहीं है, लेकिन इसकी बहुत वैल्यू है। सो इट इज इम्पॉर्टेंट। आईवी फ्लूइड्स के लिए सिर्फ एक बात याद रखनी है, व्हाट काइंड ऑफ फ्लूइड्स आर वी एनकरेजिंग? Electrolytes. साइड इफेक्ट होता है, बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। यूट्रोटोनिक मेडिकेशंस हमारे मुल्क के अंदर चॉइसेस ही बड़ी कम है। सो व्हाट वी हैव इज ऑक्सीटोसिन और वी हैव हाइड्रोकोस्टोल एंड वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स। बट दुनिया भर के अंदर अब और मेडिकेशंस भी आ गई हैं which are available, so hopefully पाकिस्तान में कुछ available हो जाएगा। This is actually a chart which shows you everything. So जो हमारे मुल्क में सब नहीं है that is called carbo-cross. Carbo-cross इस वक्त available नहीं है। इंडिया में बहुत बनते हैं, अगर इंडिया से ताल्लुकात बेहतर हो गए तो carbo-cross आ जाएगा because factories लगी हुई हैं इंडिया में carbo-cross। Transgenic acid now is a wonder drug which is being used not only in postpartum hemorrhage management but in many managements with a blood loss होता है। So अगर फील्ड में ट्रॉमा हो रहा है, अगर जनरल सर्जरी की कोई सर्जरी हो रही है, ब्लीडिंग ज़्यादा है, even gynecological surgery transgenic acid is advised। इसके बारे में सिर्फ दो बातें बतानी हैं। एक ये कि when you are doing transgenic acid the dose is 2 doses। So आप पहले 1 ग्राम देते हैं और फिर 1 ग्राम देते हैं। So the total dose of transgenic acid that you are giving is 2 grams। The second thing is, मैं जब ये तस्वीर दिखाती हूँ, many people think कि इस तरह से पहले आया करता था। आजकल it is available in the form of ampules। So ampules available हैं और एक बात और कहिए, जल्दी में आप ampule का नाम गलत पढ़ सकते हो। जो पेवलॉन का इंजेक्शन है उसके ऊपर भी ऐसे ही लिखा होता है। So you should have your transgenic acid in a PPH box। It should not be in a tray along with other medication because in a hurry you might use the wrong medication and lose the life of the patient। आखिरी बात, ट्रांसजेनिक एसिड को कम से कम 10 मिनट में लेना चाहिए। हम लोग ट्रांसजेनिक एसिड देते हैं तो में से किसी ने यूज किया है, सबने किया होगा। क्या होता है, आप कहते हैं स्टाफ को स्टाफ ट्रांसजेनिक एसिड दे दें, क्या रिस्पॉन्स आपको? थैंक यू। स्टाफ कहते हैं गिवन, आपके लोगों से भी लफ्ज में पूरा नहीं निकला था, वहाँ से गिवन भी आ गया। उससे पेशेंट को क्या होता है, नॉसिया। Patient feels terrible. So transgenic acid, when you are asking somebody to give, tell them slow dose, slow dose, slow dose. Slow देना बहुत जरूरी है। That is the important thing about transgenic acid।